हे गाइस, माय नेम इज निपुण भाटिया और इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट की। बहुत टाइम के बाद एक यूट्यूब वीडियो लॉन्च हो रहा है बिकॉज अभी तक हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे। लेकिन आज जिस टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूँ वो 1 मिनट या 1.5 मिनट में डिलीवर नहीं हो सकता है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वर्सेस इन्वेस्टमेंट इन यूएस, एंड आई नीड 5 to 10 minutes ऑफ योर अटेंशन टू अंडरस्टैंड दैट विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। हम पास्ट डेटा को रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत सारे सोर्सेज से हम कंटेंट मर्ज करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, वेदर टू इन्वेस्ट इन इंडिया और टू इन्वेस्ट इन यूएस। स्टे ट्यून विद मी। इस चैनल पर हम और भी पहले बहुत सारी वीडियोस लेके आ चुके हैं, सो इफ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस और इफ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, जस्ट गो बैक एंड वॉच एनी ऑफ माय वीडियोस एंड यू विल गेट अ गुड आइडिया ऑन हाउ एंड वेयर एंड इन व्हाट मैनर यू हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। सो चलिए, बिना किसी समय बर्बादी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, विच इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया वर्सेस इन्वेस्टिंग इन यूएस। सो गाइस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं एंड आज के टाइम पे आप इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि यूएस की मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन बाय शेयर्स ऑफ फेसबुक, amazon, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एंड एन नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन द यूएस स्टॉक मार्केट। जो आज एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज द एनालिसिस वी हैव डन फ्रॉम जनवरी 2010 टिल जनवरी 2020, विच इज अ 10 years ऑफ टाइम स्पैन। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आई गॉट अ मेल फ्रॉम वेस्टेड दैट अगर हम $100 2010 में यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते, सो वी कुड हैव गॉट अ रिटर्न ऑफ $272 और अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 172 इन द 12 years ऑफ टाइम स्पैन। लेकिन वही अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो वी कुड हैव गॉट ओनली $175, विच इज अ 75% इंक्रीज इन द 12 years ऑफ टाइम स्पैन। फेयर इनफ। इन्होंने ये चीज एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। They have compared Dow Jones Index, which is the US index of top 30 companies in US, and BSE Sensex, which is an index of India, combining the top 30 companies as per market capitalization. Market capitalization के बारे में हमने डिटेल्ड में एक वीडियो बनाया है, the link is in description. So Dow Jones versus BSE Sensex. If we compare these two things, what we have observed that Dow Jones has given a return of 169%, which is from 2010 till 2020 in a 10 years of time span. लेकिन वहीं भी अगर हम BSE Sensex की बात करें, so the BSE Sensex has given a return of 135% compared to 169%. But कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। सो वी ऑल नो दैट यूएस की जो इकोनॉमी डिफाइंड है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स, लेकिन इंडियन की जो इकोनॉमी डिफाइंड है दैट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज। एंड डॉलर और रुपी का भी एक अपना कैलकुलेशन है। सो अगर हम उस कैलकुलेशन की बात करें, सो उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट रुपीस का प्राइस था दैट वाज 49.61 रुपीस इन 2010, बट इट इज 72 रुपीस इन 2020, which is again an increase of 44%. Or we can say that the Indian currency got declined by 44%. मतलब जिस $1 की वैल्यू 2010 में 50 रुपए थी, 2020 में उसी डॉलर की वैल्यू 72 रुपीस पे थी। सो द रुपी हैज depreciated in its terms, and this is what we will be comparing with our Dow Jones index. But to compare that, there is a term which is called Dollex 30. Now, Dollex 30 is nothing, but it is an indication of Sensex in terms of the US dollars. It is an indication of Sensex in terms of US dollars. So, comparing that, Vested has given another great graph comparing that Dow Jones का जो रिटर्न है दैट इज 169%, बीएससी इंडेक्स सेंसेक्स का जो रिटर्न है दैट इज 135%। लेकिन बीएससी सेंसेक्स का रिटर्न अगर हम यूएसडी में कंपेयर करें, सो द रिटर्न इज कमिंग आउट टू बी ओनली एंड ओनली 51% ओवर द 10 years ऑफ पीरियड। इट मींस अगर आपने $100 यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, सो यू वुड हैव गॉट $269 रिटर्न इन 10 years। लेकिन अगर आपने वही $100 इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया है, so you could have got only $151 by investing in the Indian stock market. Now, this is a good analysis done by Vested. But the problem in this analysis is that Dow Jones is comparing only top 30 companies of United States of America. Only top 30 prominent countries, only top 30 prominent companies. And so the Sensex is doing the same. Sensex is giving you an indication of the top 30 well established
फाइनेंशियली साउंड कंपनीज इन इंडिया. सो इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में. यूएस स्टॉक मार्केट में देयर आर मोर देन 2000 कंपनीज विच आर लिस्टेड. इंडियन स्टॉक मार्केट में देयर आर मोर देन 4000 5000 कंपनीज विच आर लिस्टेड. नाउ अगेन these companies cannot be indicated, the growth of these companies cannot be indicated by just giving an indication of 30 companies. Okay, so what we will do, we will now compare the returns of not top 30 companies, but the returns of top 500 companies. Now, 500 is a good number because in the top 500 companies, you will be seeing that majority of these majority of the sectors are covered, and these are the top 500 companies. So in those top 500 companies, it will be a good indication of the market कि market कहाँ पे जा रहा है. So comparing that, now US का एक और index है which is called Standard and Poor's 500 index. Now it is comparing the top 500 companies in the stock market, 500 large companies listed in the United States. So 500 large companies की जब हम comparison करते हैं, so this is what the market has been in January 2020, which is 3200. The index of the top 500 companies in United States of America in 2020 is 3200. The index of the same when compared to January 2010, that is coming back past 10 years, it is 1136. So we have seen two figures from this analysis for top 500 companies in the last 10 years. Coming back to India, the Indian market. Now, Indian market, we have Nifty. Now, Nifty 50 is the index for top 50 companies, but Nifty 500 is the index of top 500 companies listed in the Indian stock market. So, यहाँ पे हमने US stock market के 500 companies का comparison किया, and now we are comparing the Indian stock market top 500 companies. So, उसका अगर हम index January 2020 में देखेंगे, so that is 9932. एंड अगर हम 10 साल पीछे जाएंगे और सेम निफ्टी 500 की स्टडी करेंगे, सो द इंडेक्स इज 4117, एंड दैट इज वेयर आवर एनालिसिस इज कमिंग in picture now, that S&P 500 which is the US index, अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें लास्ट के 10 साल में, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 184% ऑलमोस्ट. एंड निफ्टी 500 का अगर हम रिटर्न देखें, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 139% almost. So again, here also we have seen that Indian stock market has not outperformed compared to the US stock market. लेकिन लेकिन इसमें अब कैच ये है कि ये जो स्टडी है ये पिछले 10 साल की स्टडी है. पिछले 10 साल की स्टडी से ये नहीं रिफ्लेक्ट होता है कि आने वाले 10 साल कैसे होंगे. सो I am not saying that you invest completely in US stock market. I am not saying you invest completely in Indian stock market. That is completely your call. My job here is to give you a good understanding that how both the countries have performed in the past 10 years. And please note this point, that this percentage increase is over the past 10 years. It is not compounded annual growth rate. It is a growth rate over past 10 years. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के लिए हमें और डिटेल्ड में स्टडी करना पड़ेगा. क्या हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड स्केल राइट नाउ. Yes, there are certain factors like inflation and all, but I am still very hopeful on the Indian market कि Indian market बहुत अच्छे से grow करेगा. And here are some of the proofs for that, where the RBI deputy governor has said that we will be increasing our growth, we will be increasing our GDP by 11% growth rate, and India will be the second largest economy by 2031. Even if we are not growing at 11% and we are growing at 4 to 5%, India will be the second largest economy by 2040 or 2050. So the GDP of the countries, the growth of the GDP of the countries will matter a lot in the future. इंडिया में बहुत स्कोप है. इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस. इंडिया हैज अ वाइडेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस when it comes to manufacturing tractors or two wheelers. India is amongst the top 10 when it comes to exporting smartphones or cars. So all of these factors coming into picture, I am very hopeful in India, and maybe the Indian market will surpass the US market in the upcoming time. And the second point is the fees. The fees for each platform is varying. So when you are investing in the US stock market, through the platform which you are investing, they may charge from you some amount of fees. Now that amount of fees should also be put into consideration when you are talking about the returns. So it varies from uh,
So it varies from platform to platform. And since we are not marketing any, so we are not going to name any of those. But these two factors should be put into consideration when you will start investing: the fees of the platform and considering in mind the growth rate of India. In my opinion, and that is completely my opinion, in my opinion, one should always invest some amount in the international market and some amount in India. I am not saying do it 50-50, but there should be some amount, let's say 20-20-80, let's say 30-70, a blend of investments in both these markets. I think it will be most beneficial for all of us, but that is completely my opinion. It may vary from person to person. And when it comes to investment, we all know that there is no single rule which is valid for all. Customization is there, and then based on that customization you should think that where you should invest. सो गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये वीडियोस अपने दोस्तों में फैलाइए. एंड डू लेट मी नो आपको और कौन से टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस चाहिए. आई विल डू माय रिसर्च एंड आई विल कम बैक विद यू विद मोर एंड मोर सच कंटेंट. Stay tuned to my channel. Plan today for a brighter tomorrow. Thank you.